So first of all, very good afternoon to all of you, to the online participants and offline participants. So today is the last day of this FDP, and you have been tortured by yourself, by some of the resource persons, because in statistics we generally say we have to torture the data. But the faces of yourself, faces of the participants are telling that you have been tortured actually. So basic because no doubt, this workshop or this FDP definitely is a very advanced kind of statistics is over there, and most of you have not heard so many terms before this workshop. I'm sure about that. But as I told you that, and you also aware that today is the last day of this FDP, so you will have idea about the basic concept of advanced multivariate techniques as well as obviously you will know some basic you will have the some basic idea about the statistics. Whenever you have the idea about the basic statistics, then only you will be able to perform the multivariate analysis. And in the last 5 days you also have resource persons have also been discussed so many aspects about the multivariate data analysis. And you also aware that for because as I have been informed that so many persons are from the other than the statistics background, or might be some of you may not have the idea about so much idea about the mathematics. But initially, statistics is also a part of mathematics, or you can say very high level mathematics are involved when we are going to develop the univariate analysis. But in multivariate analysis, there is also you have to require a very good command on the mathematics. But as usual, the objective of this workshop is to or this FDP is to conduct this FDP with the help of the spaces. So many columns of all of us can be handled with the spaces. So as the requirement of this FDP for the audience of this FDP, I am again not going to so much detail in the mathematics. Just I will cover basic idea or just whatever the things are required to do the discriminant analysis. And we will more focus on the output because the thing is that when we have the software, then we have no need to too much involved in the mathematical things of that. But we need to be involved. What are the outputs? How to interpret that? Because in the basic kind of analysis, there is a simple kind of interpretation of the results is there. But we have seen that most of the participants are not able to do that interpretation also. But obviously, when you are attending this workshop or this FDP, then definitely you have to be interpret the result with a very dynamic form actually. And there is no only one criteria on the basis of that we can decide or on the basis of that we can say anything about the result. There is no only single way. Like in t-test, just we have a 2 3 assumptions. Just go for the ANOVA, that is a one-way ANOVA. Just go for the normality test. Then we have a number of tests. With the help of that, we can take the normality of the data. Thus, easily we can interpret the results or whether we can apply to a test or not. But in multivariate, suppose you want to test the normality, multivariate normality, that is again very difficult task. Although basic of SPSS is not perform the multivariate task. I think Sambhavi ma'am has told you that there is a Mardia test which is useful to conduct the multivariate normality test, which is useful to test the multivariate normality, which is also available in the additional package of the SPSS, that is SPSS AMOS. Although that is the test, we also have a graphical representation, as all of you are aware that graphical representation is not give the exact idea about the testing. We confirm the statement with the help of the test. Graphical
graphs can give the idea about the so many things. So with this SPSS, you can take the idea, and there is a one paper that will also I will show to you when we will perform the analysis. With that paper, or they have given the very nice, they have explored that idea very nicely actually. They have explained the idea very nicely. With the help of that, you can easily check the multivariate normality along with this spaces only. That is, there is some kind of calculation is over there, but those calculations are not so much difficult. If you have the basic idea, or if you are attending this FTP, that means basic things you can easily perform. That is the one thing. Second thing, you have studied so many techniques in the for the multivariate data analysis, like starting from the simple or multiple linear regression, then factor, then canonical correlation, conjoint cluster, logistic regression is over there. So similar to that, we also have one more advanced or one more technique which is useful for the multivariate data analysis, that is discriminant analysis. You can see the word suggests discriminant. That means something discrimination is there, and discrimination of what? जनरली वी से कि डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से करते हैं, किसी को फेवर करना. डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली उस सेंस में यूज किया था कि किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, कैसे में किसी को फेवर करना या नहीं फेवर करना. बट टेक्निक्स डज नॉट डू लाइक दिस. This use classify the observation. When we talk about the classification, then obviously you have again a number of thoughts, a number of questions in your mind. Yeah, we have studied so many techniques. Masood sir definitely tell you about so many techniques which can be used for the classification. Some of we have been discussed, like logistic regression model, like cluster also have been discussed. But why this new technique? What are the requirement of this technique? The first we will discuss what are the objective of this technique. Again, it is a definitely again it is a statistical technique, and obviously some assumptions is over there. Some may be serious, some can be ignored, but somehow we have some assumption, and obviously first we have to check the assumption. The assumptions are met out, then we can go for that particular technique. Otherwise, we have to look for other methods. So starting with this introduction, just to see it builds the predictive model for group membership. That means I have told you that we have this technique in which we use for the classification. This technique is particularly used for the classification. So this is a kind of classification technique. Cluster logistic regression model is also a technique for the classification. But how this technique is different from the previous one, or those you have discussed or those you have studied till now? In this particular workshop I am talking about. It is useful tool for situation where the total samples to be divided into two or more groups, which are mutually exclusive and collectively exhaustive on the basis of set of predictor variable. In the cluster analysis, the sir is told you that we have the samples, we have the group of the observation, and we want to classify, or we want to cluster that group into two categories or three categories decided on the number of the clusters. How many clusters you want to form, basic on that scenario. But in the cluster analysis, you will have only what kind of variables? क्लस्टर एनालिसिस में किस किस तरीके के वेरिएबल्स थे? क्लासिफिकेशन किस व्याप पर कर रहे थे? Within homogeneity, that means only you have the independent variables. कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल वहां पर नहीं था. And again you are using some kind of distance measure. Homogeneity किससे डिसाइड करोगे? Some kind of distance measure. तो so many distance measure also have been discussed. किस व्याप पर वो रिलेटेड होंगे? कोरिलेशन के व्याप पर रिलेटेड होंगे या फिर डिस्टेंस के व्याप पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है. दैट इज द वन थिंग. सेकंड थिंग, here we are going to discuss, or this technique is basically used for
classification of the independent variable based on certain categorical dependent variable. Now we will have a two type of variable in this. One is dependent variable and two or more independent variable. One variable that is dependent variable should be a categorical, क्योंकि क्लासिफिकेशन किसका होगा, जिसमें ग्रुप्स होंगे. ग्रुप्स किसमें होंगे, जो वेरिएबल हमारा कैटेगोरिकल होगा. जरूरी नहीं है. अब आप फिर की सेम प्रॉब्लम किसके आ गई कि ये तो हमने लॉजिस्टिक में भी किया था, जिसमें दो ग्रुप थे. दो ग्रुप के लिए हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी लॉजिस्टिक कर लिया था. तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप थे तो उसके लिए हम लोग मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक चले गए. तो व्हाट इज न्यू इन दैट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें भी थे हमारे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें भी है. सिचुएशन यहाँ पर कैसी हो गई, सिमिलर टाइप की हो गई. लॉजिस्टिक और डिस्क्रिमिनेंट में कोई डिफरेंस कंसेप्चुअली जितना मैंने बताया उतने में तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कॉन्टिन्यूस स्केल पर है. एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कैटेगोरिकल है, जिसमें दो कैटेगरी भी हो सकती है और दो से ज्यादा कैटेगरी भी हो सकती है. मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक या ऑर्डिनल लॉजिस्टिक के लिए भी हमारे पास सेम सिचुएशन थी. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यही के बाद एग्जैक्ट प्रॉब्लम राइज होती है. यदि आप लोगों ने बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन पढ़ी होगी तो दैट वाज व्हाट, probability that y will take value 1 under a given x is equal to 1 upon 1 plus e to the power minus x beta. That was the equation for the logistic regression model. हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसके यहाँ पर क्या किया था आपने, you want to classify कि probability बेसिकली वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में कर क्या रहे थे आप लोग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कर क्या रहे थे, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे किसकी, एस्टिमेट कर रहे थे एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इस सक्सेस होने में मॉडल इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 गिवन x. दैट वाज द मॉडल. यहां पर भी प्रोबेबिलिटी निकल तो यहां भी रही है, बट हियर वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिग्रेशन मॉडल, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल इज देयर. इस तरीके का है. वी वांट टू क्लासिफाई द independent variable as per the categorical variable. प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड किस तरीके की, दो तरीके की प्रोबेबिलिटी बेसिस ऑन द प्रायर प्रोबेबिलिटीज. हायर प्रोबेबिलिटीज मतलब एक कैटेगरी जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है उसमें मान लो दो कैटेगरी है तो वी कैन से द इक्वल वेटेज, दैट मींस प्रायर प्रोबेबिलिटी इज 1 by. द गिवन सिचुएशन basically in logistic regression what we are doing, probability of y is equal to 1 given x is equal to 1 on 1 plus e to the power minus x beta. That was the equation. That was the equation for the logistic regression model. ठीक, इस इक्वेशन से हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे, what will the probability of
having y will take value 1. इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए नाउ वी विल डिस्कस हाउ द डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल. So DA is a technique for analyzing when the criterion or dependent variable is categorical and predictor or independent variables are interval or ratio in nature. The usefulness of the discriminant model is based on its accuracy rate, ability to predict the non-group membership in the categories of the dependent variables. The discriminant analysis works by creating the new variable called the discriminant function. In that, basically, we are calculating the odds ratio. Odds ratio calculate in logistic regression. Basically, we are calculating the odds ratio. Odds ratio के यहाँ पर हम बता रहे थे कि इसके एक यूनिट चेंज होने से कितने परसेंट हमारे चांस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं. उस तरीके का इसमें चांस नहीं है. इसमें सिर्फ है कि मान लीजिए कि ग्रुप जो बनाना है तो नई एंट्री आई तो वो नई एंट्री बिलोंग्स टू द कैटेगरी ए और बिलोंग्स टू कैटेगरी बी. वो प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज ना दे करके प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज भी कैलकुलेट हो सकती है कि कितनी आएंगी. बट मेन ऑब्जेक्टिव इज कि वो ग्रुप ए को बिलोंग करेगा कि ग्रुप बी को बिलोंग करेगा जो कैटेगरीज आपकी बनी हुई ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन. And basically it's similar to the regression equation. I also told you that इस सेंस में कि इसमें भी आपके पास लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है एंड मल्टीपल लीनियर डिस्क्रिमिनेंट है. लीनियर डिस्क्रिमिनेंट in which we have only two categories, in which you have only two categories, and multiple linear in which you have response variable will have more than two categories. Now I am talking about the linear relationship. Then obviously there is some linear relationship between x and y. So what kind of relationship is over there? We will have the regression equation. We will have the equation like is equal to बी नोट में ऐसे करके लिख दे रहा हूं जल्दी के लिए प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 प्लस एप्सिलॉन. This is the linear. This is the equation for the multiple linear regression model. But the condition is that in this linear regression model, we will have y is continuous regression, continuous variable. But in this, for the discriminant analysis, your y should be categorical. And for logistic regression model, what is the model? For logistic regression model, this is the model. So now you can see that in terms of mathematical format, we have a different kind of model equations. So obviously, we will have a different kind of approach in both the models or all the models actually.
This model, this is the model for the discriminant analysis. But condition is that in this discriminant, for the discriminant analysis, your Y should be categorical, either with two categories or more than two categories. But equation is a linear equation. Okay, if you have two categories in the Y, that is the linear. If Y has more than two categories, then it will be multiple, then it will be multiple discriminant analysis, MDA. But in case of logistic, that is a kind of non-linear regression. So I discussed all these things in ANOVA, regression and discriminant. These are the three basic concepts. Number of dependent variable, and then in all the three we will have one. But the nature of the independent variable, number of the independent variable in all three, in ANOVA we will have the multiple. That means more than one variable. In regression, independent may be one or maybe more than one, simple or multiple case जैसा भी होगा. In discriminant we will have multiple independent random variables, multiple independent variables. What are the differences in these three techniques? For the ANOVA, dependent variable is a metric variable. जो response आपका होता है dependent variable, that is your metric in ANOVA. Same for regression, but in discriminant it is a categorical. Metric means either it is on ratio or continuous scale. But nature of the independent, in ANOVA it is a categorical. In regression again it is metric, and in discriminant again it is a metric type. The main difference between discriminant and regression comes when multiple linear regression is a continuous response variable, and in discriminant your response is a categorical. Now what are the objectives to discuss this discriminant analysis? It is a linear combination of the predictor or independent variables that best discriminate between the categories of the criterion or the dependent variable. जैसे अभी आप लोगों को सबको इकट्ठा करके एक ग्रुप में जैसे सपोज बिठा दिया जाए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, चार डेटा सेट या तीन वेरिएबल्स हमने इंडिपेंडेंटली लिए, कि आपकी हाइट ले ली, आपका हीमोग्लोबिन या कोई और एक बॉडी पैरामीटर हमने मेजर कर लिया, इस तरीके से चार पैरामीटर्स आपके मेजर कर लिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी वांट टू क्लासिफाई ईदर बाय द जेंडर, मेल और फीमेल, or by some other categorical parameters. Now, this can also be examined whether significant difference exists among the groups in terms of the predictor variable. क्या वो significant difference groups में आ भी रहा है कि नहीं भी आ रहा है? And determination of which predictor variables contributes to the best, to the most of the intergroup differences. Also, we can identify which particular predictor is contributing highly in discriminating the group. क्योंकि चार वेरिएबल हम ले रहे हैं, चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, तो दैट मीन्स कि चारों के चारों आपके इतना वेरिएबल चारों के चारों तो सेम इफेक्टिव तो होंगे नहीं ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट करने में. इजीली वी कैन आइडेंटिफाई दैट कि कौन सा ग्रुप है जिसकी हेल्प से, या जो ग्रुप उस ग्रुप जो वेरिएबल आपके ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट करने में आपकी डोमिनेटिंग वेरिएबल कौन सा है. Also we have the evaluation of the class accuracy of the classification, कि जो क्लासिफिकेशन हमने किया है तो सेम थिंग कैन ऑल्सो बी मेजर्ड कि कितने करेक्ट क्लासिफिकेशन है, कितने परसेंट हमारा मिस क्लासिफिकेशन हुआ है. These are some examples I am skipping, क्योंकि कई सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं इस तरीके से कि कहीं पर भी इस तरीके का कि डिपेंडेंट वेरिएबल 3 4 5 6 विच आर शुड बी ऑन द कॉन्टिन्यूअस स्केल, और एक रेस्पॉन्स वेरिएबल जहां पर हमारे कैटेगोरिकल है. बिजनेस में ले या किसी भी एक डोमेन को आप, या अलग अलग डोमेन में हम ले सकते हैं कि मान लीजिए कि ब्लड डायबिटिक, ठीक है, वो प्री डायबिटिक जोन, नॉन डायबिटिक है, प्री डायबिटिक जोन में या डायबिटिक है,
3 कैटेगरीज या सिर्फ बोर्ड कैटेगरीज डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक अलोंग विद सम फैक्टर्स कि आप उसका ग्लूकोज लेवल कितना है, उसका बीपी कितना है, या उसके ओन फैक्टर्स जो आपके ग्लूकोज जो आपके डायबिटिक होने में कंट्रीब्यूट करते हैं। या सिर्फ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि वो पर्सन आपका लो टाइप का है, मतलब दैट मीन्स कि आपकी उसकी जो कैपेसिटी है परचेसिंग वो लो है, या मीडियम है, या हाई है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स की उसकी इनकम कितनी है, उसके अदर एक्सपेंडिचर कितने हैं, उसके पास सोर्सेज कितनी है, उसकी एज क्या है, उसकी प्लेसिंग क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इजिली क्लासिफाई द डेटा। So I told you about that when we are discussing any kind of statistical model, then obviously some assumptions is there. Similar assumptions, those we have discussed in the multiple linear or simple linear regression model, can be employed here also. Like linearity, normality, multicollinearity. Along with that, the multicollinearity, we will also have homogeneity of variances. We have also discussed that. So rather than discussing the homogeneity of variances, we have called about the variance covariance matrix. ये चीजें आपने इस केस में की होंगी जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की भी आपने बात की होगी, तो कांस्टेंट वेरिएंस की आपने बात की होगी। नॉन मल्टीकोरिलेटी दैट मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी uncorrelated. Normality, we are not talking about the, that is the one thing is there. If we check the normality of all independent variables separately, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उन सब की हम एक एक करके नॉर्मलिटी चेक कर ले, इट डज नॉट मीन दैट कि वो जब उनको ग्रुप करके हम उनकी मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी चेक करें कि वो मल्टीवेरिएट नॉर्मल होंगे। बट एक कंडीशन हम कह सकते हैं, इस चीज को एज्यूम किया जा सकता है कि यदि सारे वेरिएबल्स हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं तो देन देयर मे बी अ हाई चांस कि वो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी फॉलो कर सकते हैं। बट ये स्टेटमेंट एक तरीके से क्या, इस स्टेटमेंट को श्योर स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता। Then I told you that, or madam is also told you that we have the Mardia test to test the normality of the variables. That can also be performed with the spaces most package, additional package. Otherwise, you can go for the R, otherwise or other softwares, or it can also be checked by the some graphical procedures. We're talking about the multivariate normality with the predictor variables. Independent variables should have the multivariate normality. Then it is the fairly robust violation of these assumptions, highly sensitive towards the outlier. That means no outlier should be present in your data when you are going to employ discriminant analysis. और सारी assumptions आपकी चल जाएंगी, but outliers नहीं होना चाहिए। ठीक, just keep you this point in mind कि हम डेटा को देखेंगे भी एंड देन वी विल सी कि कोई आउटलायर नहीं है। एक दो जगह पर assumptions आपका नॉर्मलिटी की या कुछ वायलेट करेगी, देन कैन आल्सो बी, देन ये कैन आल्सो बी परफॉर्म। बिकॉज मैंने आपको बताया कि एडवांस लेवल टेक्निक होने की वजह से देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिसाइड कि आर डिस्क्रिमिनेशन या आर जो भी हम लोग कर रहे हैं दैट इज गुड और नॉट। एंड ग्रुप शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब आपस में इस टाइप के नहीं होने चाहिए, क्लियर कट कैटेगरीज होनी चाहिए। क्लियर कट कैटेगरीज से क्या मतलब है, दे शुड बी कैटेगोरिकल, नॉट शुड बी ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में थोड़ा मिक्स होता है, इससे थोड़ा बेहतर है, उससे थोड़ा बेहतर है, इससे थोड़ा कम है, उससे थोड़ा कम, वो बात नहीं होगी। दैट ग्रुप शुड बी क्लियरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे शुड बी वेरी क्लियर दैट लाइक मेल एंड फीमेल। If we talk about the sample size, obviously sample size should be large. How much large? जितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उसके 4 to 5 टाइम्स। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि कैटेगोरिकल वेरिएबल जो आपके हैं उनकी कैटेगरी भी सेम होंगी, उतने मेल होंगे उतने फीमेल होंगे, उतने यस होंगे उतने नो होंगे। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। If it is so, then obviously it is good, but in some cases the proportion of all the 2 or 3 categories are not same, then it can also be accepted.
So I talk about this regression, this discriminant model. So you can see that d is equal to, so d is the discriminant function. That's why we are not use y here, because y is used for the response, and response involve multiple regression model. So d is used for the calculating the discriminant score. So we are not writing y is equal to beta naught plus beta 1 x1. We are writing d is equal to beta naught plus b1 x1 plus b2 x2. And one more thing is also there. We do not have epsilon is here. As in the multiple linear regression, we always have the in model epsilon. Same thing you have also, I think you have not noticed also. लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल जब हम लिख रहे थे तो वहां पर भी आपने क्या किया था, एप्सिलॉन मॉडल में नहीं लिखा था। जिस तरीके से हमने उसमें भी नहीं लिखा था एप्सिलॉन, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एक चीज की प्रोबेबिलिटी उस मॉडल से लिखी गई थी। ठीक है, सेम थिंग इज हियर, वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्क्रिमिनेंट स्कोर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कोर वी विल डिसाइड कि जो नई ऑब्जर्वेशन है या कोई भी ऑब्जर्वेशन वो ग्रुप ए को बिलोंग करेगी, ग्रुप बी को बिलोंग करेगी कि ग्रुप सी को बिलोंग करेगी, कैटेगरी किस में जाएगी। तो वी विल हैव टू फर्स्ट एस्टिमेट these b dot b1 b2 जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, that is the simple linear regression or multiple linear regression model problem. Now the thing is only that your d what will you calculate, जिसको बाद में y fitted value के नाम से लिखते थे, and y this is like that, जो आपका fitted score आता था। this discriminant function is also known as canonical rule. And how will you decide कि कौन से ग्रुप में क्या ऑब्जर्वेशन जाएगी आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस डिस्क्रिमिनेंट स्कोर? इफ ग्रुप साइज इज इक्वल, दैट मींस दो कैटेगरी है, दोनों के नंबर्स सेम है, देन द मीन ऑफ द सेंट्रोइड, दो ग्रुप बनेंगे, दोनों ग्रुप के अलग अलग, अब ग्रुप 1 के लिए एक अलग निकलेगा, ग्रुप 2 के लिए अलग निकलेगा, दोनों ग्रुप के फाइनल मीन का जो स्कोर होगा, जो मीन स्कोर होगा, दैट विल बी द कट ऑफ पॉइंट। लोअर देन गो टू द कैटेगरी ए, upper then go to the category B. Is it clear? If these group size are not equal, then we will use the weighted mean formula. Weighted mean कैसे calculate करते हैं? What is the formula to calculate the weighted mean? n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2। weighted mean का formula सबसे फर्स्ट में पढ़ा होगा आपको, ठीक? Because when size of the groups are not same, that is called कंबाइंड मीन बोलते थे या फिर उसको वेटेड मीन बोला जाता है। तो सेम अप्रोच वी विल यूज हियर व्हेन द ग्रुप्स आर नॉट इक्वल साइज। सो दीज आर द स्टेप्स व्हिच वी यूज्ड इन प्रोसेसिंग द डीए और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉर्म द ग्रुप्स, देन वी विल एस्टिमेट द डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, then determine the significance of the function and variables. Estimation is a one thing, estimate तो हो गया, it is not necessary that कि सारे के सारे variables या जितने functions आपके, एक function या एक से ज्यादा function बन रहा है, वो सब आपके significantly contribute करेंगे। जैसे multiple linear regression model, step wise regression भी आप लोगों ने किया था। क्यों करना पड़ा था? Because when we are using all the independent variables at a particular time, we are exploring all the independent variables, then out of those independent variables, some are significant and some are not significant. The non-significant उनका कोई role नहीं है, that means we can exclude. Same thing is over here. कुछ variables होंगे जो discrimination में ये useful होंगे, कुछ होंगे जो discrimination के लिए significantly contribute नहीं कर रहे होंगे, या overall function भी आपके एक से ज्यादा फंक्शन यदि बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, यदि देखिए दो कैटेगरी हैं y, if you have a two categories in a y, then we will have the one discriminant function. If you have the three categories in y, then you will have two discriminant function. If you have four categories in y, then you will have three, five, four, five categories के लिए four discriminant function. But it is not necessary कि सारे के सारे discriminant function भी significant हो। So we have a two type of testing is there. One,
first we will test the significance of the variable, and then we will test the significance of the function, and then interpret the discriminant function, and obviously the perform the classification and validation कि वो discriminant function बन तो गया, but उसकी वजह से classification हमारा कितना correctly या कितना uncorrectly classify हो रहा है data. These are some terminology which we will use during this analysis. So I am skipping this right now because we will use all these terminologies simultaneously with when we use the data set. Or just in a very short, I can explain these terminology so that we will discuss all these points after when we will go to the hands-on. So centroid is the mean value for the discriminant score of a particular group. Particular group के mean को basically we call it is a centroid. Mean किसका होगा? That will be the mean of the discriminant score. Then there is a classification matrix, which is also known as the confusion matrix or named as the prediction matrix, which is used for how much you are correctly classify the observation. तो डेटा कितने परसेंट आपका करेक्ट क्लासिफाई या मिसक्लासिफाई कर रहा है, या आपकी वहां पर सेंसिटिविटी कितनी है या स्पेसिफिसिटी कितनी है, दैट मींस टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एरर कितनी है. Then obviously there is a more one lecture that we have studied on the canonical correlation. Canonical correlation किसके लिए पढ़ा था? We have a correlation or we have the association between two set of variables. दो set of variables के बीच के correlation को भी talk about या association check करने के लिए भी call as canonical correlation. यहाँ पे वो दो set of variables क्या होंगे? Those will be the discriminant score and group of the response variable, group of the dependent variable. उसके बीच का जो कोरिलेशन कहलाएगा दैट इज द कैनोनिकल कोरिलेशन. अभी आपने सिंपल वे में पढ़ा था कि दो सेट ऑफ वेरिएबल्स थे. वेरिएबल सेट 1 में हमने x1 x2 x3 रखा, सेट 2 में x4 x5 x6 रखा. देन व्हाट विल बी द कोरिलेशन बिटवीन दीस टू, दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल कोरिलेशन. वो ग्रुप सेट ऑफ वेरिएबल्स को मैं ग्रुप कह सकता हूँ. ठीक, एक सेट को एक ग्रुप, दूसरा सेट दूसरा ग्रुप, तो वो ग्रुप के बीच का कोरिलेशन ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स का. तो वो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स यहाँ क्या होंगे स्पेसिफिकली? दोज विल बी द डिस्क्रिमिनेंट स्कोर. एंड नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट स्कोर. डिस्क्रिमिनेंट स्कोर इज इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. दिस डिस्क्रिमिनेंट स्कोर था जो किससे आ रहा था? कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लीनियर कॉम्बिनेशन से आ रहा था. राइट, डिस्क्रिमिनेंट स्कोर होगा. कोफिशिएंट ऑब्वियसली जब आपके जैसे हमने बीटा कोफिशिएंट पढ़े थे रिग्रेशन मॉडल में, नाउ वी विल कॉल एज द डिस्क्रिमिनेंट कोफिशिएंट. अगेन वी विल हैव अ टू टाइप्स, स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड. जब बात करेंगे, जब रिजल्ट आएगा तो जस्ट रिमेंबर द टर्म्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग हियर एक्चुअली, वो क्या क्या हैं. ठीक, discriminant function coefficient, so we will have two type of coefficient, standardized and unstandardized, as similar to the multiple linear regression. वहां पर भी आपके standardized बीटा थे और standardized बीटा थे. Then eigen value, what we mean by the eigen value? We have also studied many times. I think in the factor analysis definitely we have heard the name eigen value. What is that? It is the ratio between group to the within. Between group to the within का मतलब क्या हुआ? Variance explained by the particular variable or particular. What? Suppose you are performing the ANOVA. In ANOVA, we will have a two type of factors. One is the within group, and second one is the between group, and second one is the within group. Sum of square within group, sum of square between group. If you take the ratio between for within का मतलब होगी एक ही वेरिएबल के, एक ही ग्रुप के अंदर का जो वेरिएशन, और एक वो बिटवीन का मतलब ऑल द बेस्ड ऑन ऑल द वेरिएबल्स. कौन सा ज्यादा होना चाहिए, बिटवीन की विदिन?
कौन सा सम ऑफ स्क्वायर ज्यादा होना चाहिए? बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर ज्यादा होना चाहिए कि विद इन? बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स बिटवीन अपॉन विद इन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स व्हाट? आइगन वैल्यू वन से ज्यादा या वन, या जितनी ज्यादा से ज्यादा हमें मिल जाए, दैट विल बी प्रिफरेबल, बट देयर इज नो कट ऑफ। जितनी ज्यादा हो, वी विल सी। पॉइंट इज दैट हायर आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड या प्रिफरेबल। देन स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट, पूल्ड विद इन ग्रुप कोरिलेशन। अगेन पूल्ड कोरिलेशन, जैसा आप लोगों ने पूल्ड वेरिएंस पढ़ा था। पूल्ड वेरिएंस कैसे निकालते हो? जब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए निकालते हैं हम लोग, पूल्ड वेरिएंस यूज होता है। पूल्ड वेरिएंस यूज होता है जब आप इंडिपेंडेंट टी सैंपल, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट करते हैं। On the similar note, we can calculate the pooled correlation or pooled covariance. Pooled covariance मतलब एक ग्रुप का उसके प्रेडिक्टर्स के साथ। इस तरीके से आपका we will discuss also in the when we will calculate this, and then we take the average. The separate covariance matrix for all the. If you are talking about the correlation, then it will be the correlation. If you are talking about the covariance, then you can calculate the pooled covariance. Now structure correlation. Structure correlation means discriminant loadings. जैसे आप लोगों ने फैक्टर लोडिंग की थी, फैक्टर एनालिसिस में कॉमनलिटीज, क्या कंडीशन थी? पॉइंट एवरी फॉर एवरी वेरिएबल दैट स्कोर शुड बी ग्रेटर देन 0.5. Here the condition is that for every variable your this structure correlation should be greater than 0.3 से ज्यादा आपका स्ट्रक्चर कोरिलेशन या डिस्क्रिमिनेंट लोडिंग होनी चाहिए। Then we will have the Wilks lambda. Wilks lambda भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। Wilks lambda अगेन, जैसे हम लोगों का मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या यूज करते थे? आर स्क्वायर। वोट आर स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। क्या बताता है? एक्सप्लेन वेरिएबल वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जस्ट opposite to that, variation explained by the independent variables. It talks about the variability of variance unexplained, unexplained variance। अनएक्सप्लेन्ड बता रहा तो कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली वेरिएंस की बात हो तो देन ऑब्वियसली एज केस ऑफ आर स्क्वायर 0 to 1, देन इट विल आल्सो बी लाइज बिटवीन 0 and 1। वेरिएंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएंस 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से ग्रेटर नहीं होगा। एक्सप्लेन करने वाले बात करें तो 100% ज्यादा है तो वेरिएशन एक्सप्लेन हो सकता है। What Wilks lambda is unexplained variance। unexplained variance कितना होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। That means whose for lambda we will prefer those values which are lower, not close to 0. Those values will be preferable. One thing is clear, eigen values higher side की preferable है, Wilks lambda में lambda की value lower side की preferable है। Why so? Now you have the clear cut idea. Now Cox and test, जैसे आप लोगों ने जो मैंने बेसिकली होमोजेनिटी ऑफ कोवेरिएंसेस की आपसे बात की थी, वेरिएंस कांस्टेंट। तो वेरिएंस कांस्टेंट के लिए वहां तो सिर्फ आपने ग्राफ बना करके देखा था या फिर किससे चेक किया था कांस्टेंट वेरिएंस है कि नहीं है? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में वेरिएंस कांस्टेंट किससे चेक किया था? डर्वन वॉटसन ऑटो कोरिलेशन के लिए यूज हुआ था। उसका क्या नाम है? वीआईएफ मल्टी कोलिनिटी के लिए हो गया डर्वन वॉटसन। चीज और, चलो एनीवे, Lebanese test तो basically constant, तो Lebanese test can also be used for the homogeneity of variances। Bartlett भी यूज होता है। Similar to that, we will have जैसे आप लोगों ने छोड़ी उसको फैक्टर एनालिसिस में कोरिलेशन मैट्रिक्स चेक की थी, आइडेंटिटी किससे चेक की थी?
ओ केमो किया था। केमो की हाइपोथेसिस क्या थी? योर कोरिलेशन मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स जो नॉन डायगोनल एलिमेंट थे उनकी वैल्यू 0 है। सिमिलरली इट चेक कि कांस्टेंट जो आपके कोवेरिएंसेस हैं वो सब ग्रुप्स के सेम है या नहीं है। दैट मींस यू विल हैव अ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। व्हेन इट चेक whether your variance covariances matrix is homogeneous or not, it check basically the homogeneity of variances variance covariance matrix. Box-M test under the null hypothesis that groups are groups covariances are homogeneous. तो ये नल हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए बॉक्स एम में? कोवेरिएंसेस होमोजीनियस होने चाहिए। दैट मींस इट शुड बी एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस फॉर बॉक्स एम शुड बी एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि अंडर एच नोट वी आर चेकिंग दैट टेस्टिंग दैट ग्रुप्स आर वेरिएंस कोवेरिएंसेस आर homogeneous. Now similarly we will have the stepwise ये means stepwise का मतलब सिर्फ इतना है जैसे आप लोगों ने स्टेप वाइज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन किया था। कैसे? एक ऐड करता था, दो तरीके से किया था, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। सेम थिंग इज देयर, वी कैन यूज अ नंबर ऑफ टेक्निक्स इज ओवर देयर, जिसमें आप फॉरवर्ड ही बेसिकली यूज करता, सबसे पहले एक रखता, उसके बाद फिर दूसरे को एंटर करता, फिर उसके बाद तीसरे को एंटर करता ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या होंगे? वो क्राइटेरिया अगेन जिसकी विल्क्स लैम्डा कम हो, जिसकी लैम्डा की वैल्यू कम हो, या जो आइगन वैल्यूज के रेस्पेक्ट में या कोई और क्राइटेरिया जो भी चूज करना है उसके रेस्पेक्ट में वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करे और हाईली सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट। These are some methods which you can also use in the stepwise discriminant analysis. Wilks lambda will be there. Other than that, you can also use Mahalanobis distances, unexplained variance, smallest f ratio, Rousby, U def value, U probability of f. Any of the method can be used. These methods are useful as per the requirement or as per the situation or as per the objective of your data set or your problem. Sometimes, but generally we prefer the Wilks lambda approach. Okay. Now, how will you assess the validity of the DA? Just see this one. If you plot the discriminant score of both the groups, this is the discriminant score of this group, and this is the discriminant score of this group, and you can see that there is an overlapping. If you have overlapping higher, which means that discriminant score is not that discriminant function is not a good function. But if you have, that means somehow you want this should not be these two graphs should be disjoint. There should not be a intersection. This intersection should be 0. अलग अलग होने चाहिए दोनों के साथ। बट इन जनरल रियल डेटा सेट के साथ ऐसा नहीं मिलेगा। बट वी हैव टू चेक दैट कि इस तरीके का भी ना हो जो बिल्कुल एकदम इतना ओवरलैप कर रहा है। इस वे में यू विल हैव पुअर क्लासिफिकेशन, मे बी 30-40% करेक्ट क्लासिफिकेशन या एक्यूरेसी होती है। These are the limitations. Outlier का बेसिक मतलब मेन पर्पस इज दैट यू हैव टू चेक द आउटलायर। ये आउटलायर कोई भी इस तरीके का नहीं होना चाहिए जो आपका किसी भी डेटा सेट में कोई भी आउटलायर नहीं होना चाहिए। एंड अदर प्रोसीजर में यदि बात करें तो कार्ड क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री एंड सम अदर मेथड्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर दिस discriminant analysis. So general speaking means what we can take from here. LDA outperforms logistic regression if the distribution of predictors is reasonably multivariate, normal, with constant variance. In that case,
लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल से डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस गिव्स द बेटर रिजल्ट्स। बट सपोज कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके कैटेगोरिकल हैं, मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी नहीं आ रही है, then obviously a logistic regression model is preferable. A logistic regression model is good rather than discriminant analysis. QDA outforms LDA if the covariances are not same. अब आपने कहा कि covariances की हमने मैट्रिक्स चेक की, but covariances are not same. The covariances are not homogeneous. Then what can be done? In that case, you can go for the quadratic discriminant analysis. Quadratic discriminant analysis means जिस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक रिग्रेशन मॉडल या पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल किया होंगे, एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एक्स, quadratic terms can also be incorporated. b1 x1 plus b2 b1 x1 plus b2 x1 square plus b3 x2 plus b4 x2 square. That will be your quadratic discriminant analysis. KNN, K nearest neighbor, performs better if the decision boundary is extremely non-linear. Non-linear कर्व टाइप से आपके जैसे डिस्क्रिमिनेट हम करें कि सीधा सीधा, जैसे क्लस्टर में सबने बताया होगा कि सीधा सीधा एक बाउंड्री हम आइडेंटिफाई करने की जिसके ब्याज से वो दो क्लस्टर आपके इजीली डिस्क्रिमिनेट हो जाए। यदि वो क्लस्टर सीधे ना बन करके कुछ फंक्शन की फॉर्म में बन रहे, कोई कर्व बन रहा है आपका, इन दैट केस KNN is better than the discriminant. And some also there, of course, we can adopt R model logistic QDA to include the polynomial term, interaction term. To improve the qualification, you can use overfitting. That means these all models are there, but at a particular time which can be used, it only depends on your data set, the structure of the data set, characteristics of the data set, along with the problem of the objective of the topic. So if we talk about this one, and you can take the screenshot of this slide, which can be summarized all type of multivariate techniques. Just start from this middle. Number of dependent variable. Number of dependent variable. If it is one, then we will go for the dependence method. If it is none, then we will go for the interdependence method. In interdependence method, that means जब आपने factor analysis किया था तो all variables are independent variables. In cluster also, all variables considered as the independent variables. Same for the perpetual mapping. All variables should be considered as the independent. With the independent variables सिर्फ आपके पास है, then you can go for these techniques. What if you have a one dependence variable or some dependence method? In that, if that dependent variable level of measurement, कहाँ measurement किया जा सकता है? Non-metric, that is nominal. If the dependent variable is metric, that is sorry, non-metric, that is categorical. In that case, you can go for the conjoint, you can go for the discriminant. If it is metric, then you can go for the multiple regression, ANOVA, MANOVA, conjoint. तो conjoint में सबने दोनों केस आपके साथ डिस्कस किया हूं. And if it is ordinal, then we'll go for the Spearman rank correlation kind of. So this is all from the theoretical aspect. Now just open the data set. So online participants, if you have any query, any question, then you can just ask me regarding this, regarding the clarification on the theory aspect. If you are okay with the theoretical part, then you can also open the data set. And if you have any query, then you can just ask me by text the message, by messaging, or by allow me speaking. So just you can send the text message so that we can answer your queries. If you have any query till now, otherwise just open the data set. The data set, that is, this data set is very popular. Data set, it is iris data set. Okay, because that data set has play a significant role
in developing all these techniques. ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग का मतलब, जब ओवरफिटिंग का मतलब ये है कि उतना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ओवरफिटिंग से मतलब, यदि आपको सिंपल वे में मैं कहूं, कि जितना हमने माना कि ये कौन, जो ओवरफिटिंग से मतलब कि जैसे अभी कैटेगरीज आपकी 50 थी, मान लीजिए, ठीक, एक ग्रुप की कैटेगरी 50 थी और आपने प्रिडिक्ट कर दिया 70, ग्रुप को ओवरफिट कर देना, ये अंडरफिट, ये किसी चीज को बहुत, जैसे हम लोग जनरल सेंस में कह नहीं देते कि मैंने तेरे से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी, या तेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप उस चीज से रख लें, बट वो एक्सपेक्टेशंस पे उतना ना आए। तो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि ज्यादा आएगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं आया। अंडर एक्सपेक्टेशन कि उतना नहीं रखा हुआ था, लेकिन वेरिएबल्स आपके उतना आ जाए। जैसे ओवरफिटिंग का जो बेस्ट एग्जांपल हम लोग देते हैं जनरली, कि मान लीजिए कि हमने बांध कहीं पर बनाया है, या कोई पुल हमने बनाया है, और पुल से हमने वेट, या कोई गाड़ी क्रॉस करा दी जो ओवर वेटेड थी, वेट हमने माना था कि, तो जैसे लिफ्ट का बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, कि हमारी लिफ्ट है 10 लोगों को ले जाएगी, लेकिन 10 लोगों में भी कितना है, वेट की तो कंस्टेंट है। हमने कह दिया कि 1000 किलो वजन ये आराम से लिफ्ट उठा सकती है। हुआ क्या, कि 600 या 700 केजी जैसे वेट हुआ, उतने में वो टूट गई। हमने क्या किया, ओवर एस्टिमेट कर दिया चीजों। दैट मीन्स इस तरीके की सिचुएशन, जब ओवर फिटिंग का मतलब कि जब हम चीजों को ओवर एस्टिमेट कर दें। नाउ जस्ट ओपन द डेटा सेट, and in this data set you can see we will have the 4 variables, and in 5 variables basically in this data set. One is the categorical variable. In this we have the 3 categories. 3 categories are like, one is representing the setosa, 2 is representing the versicolor, and 3 is representing the virginica. Got it? तो ये categorical variable है इसमें, and on the basis of all these 4 independent variables, that means sepal length, sepal width, petal length, and petal width, we want to classify plant, or that particular plant belongs to which particular category. कौन सा वो, एक हमने कुछ ये हाइट विड्थ हमने दी, सेपल लेंथ और पेटल विड्थ, सेपल विड्थ की, then on the basis of that you can easily classify कि ये पौधा किस ग्रुप का है, किस स्पीसीज का वो प्लांट है, सितोसा है, वर्सी कलर है, या वर्जिलिका। So it is a problem of, इनिशियली प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस परफॉर्म कहां से होगा, इट शुड बी इनसाइड द क्लासिफाई। तो जस्ट go to classify, and in that classify you can see that there is a discriminant, there is a discriminant. Just click on it, classify, then discriminant. Okay, now you can see that he is asking is the independent variables and grouping variables. So grouping variable is what, that is dependent variable, grouping is categorical variable. So he is asking, as you click on this grouping variable into this dialog box, when he highlighting the define range, define range, just click on it. What is the minimum value in this data set? 1, and maximum is 3. This particular time we are just considering only 2 variables, 2 categories. क्योंकि पहले 2 के लिए कर दे, फिर 3 की बात करेंगे, क्योंकि 2 का इंटरप्रिटेशन थोड़ा इजी है, 3 के में और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि 2 के में सिर्फ आपका एक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन बनेगा, और 2, यदि 3 कैटेगरीज हो जाएंगे, तो देन यू विल हैव अ 2 डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। ठीक, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस 1 to 2 only. It can be 2 to 3, 2 and 3. It can be 1 and 2 or 2 or 3, but it cannot be 1 to 3. 1 से 3 लेंगे, मतलब 1 और 3 को एक साथ नहीं लिया सकता, क्योंकि फिर 1 से 3 तीनों आ जाएंगे। It is not necessarily because this is categorical variable that means I have assigned the value 1 and 2.
In your data set that can be 0 1 2, in your data set that can be 0 2, जिस भी नंबर से आपने उनको डिसाइड किया है. यदि 0 1 2 है, then you can take 0 and 1 or 1 or 2. Got it? Then click on continue and put all the variables into the independent box. Now open the statistics tab. In this, just click on descriptive statistics, means, univariate ANOVA, box M is there. Okay. Then click on unstandardized. And also we go for the Fisher, but Fisher consider the, I think, standardized. Just click on unstandardized. Which I am talking about, matrices. Whether you want the within group correlation matrix or within group covariance matrix. As per the choice, you can consider any one. Suppose we are considering the within group correlation, or just we can consider both together. No issue with that. Within group correlation as well as within group covariances. Got it? Okay. Then go to classify. Go to classify. In classify, he is asking about the prior probabilities. This kind of situation is not in the logistic regression model. We do not have the prior probabilities. Just we talk about probability of success is defined by that particular model. But here I told you that prior probabilities can be equal, but can be unequal. Can be equal or unequal. In the compute from the group size, जैसा जैसा ग्रुप का साइज होगा, इट कैन बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और ऑल ग्रुप्स आर इक्वल. दैट मींस वी कैन गिव इनिशियली सेम वेट सेम प्रोबेबिलिटी टू ऑल द ग्रुप्स. दो ग्रुप है, दोनों को हम 1/2 या 0.5 प्रायर प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम दे रहे हैं. Got it? Although in this particular data set, because we have this data set, I think you have heard about this. In this data set, there is a 150 observation and 3 categories. We will have the 50 observation for each category. So that means again, if you compute from the group size, so in this data set, the size is 50, 50, 50 for each category. Then again, you will get the same 0.5, 0.5, 0.5. यदि आप दो केस कर रहे हैं. Okay, तीनों केसेस को लेंगे, then it will be 1/3, 1/3, 1/3. All groups are equal. Then just click on summary table. Then click on leave one out classification. Leave one out classification. I will explain one by one all the aspects. It will give you the classification table. This option will give you the classification table at the end. With same accuracy model की बताएगा. Now just click on plot. Just come to the plot option and click on separate groups. Separate groups. Then continue. Got it? So just click the 3 points: summary table, leave one out classification, and separate groups. Okay. Save. We are not going initially to save anything. Otherwise, just click on the discriminant score. You can save the discriminant score. But we are not going that. Like in a factor score, as you have said, so similarly you can save the discriminant score along with the predicted group membership. वो क्लासिफाई होने के बाद किस ग्रुप में गया है वो भी आप सेव कर सकते हैं along with the probabilities of the group membership. So just we are not doing anything with the save. Just click on and you just see one point here. Enter independent vector and enter independence together, and after that we will have the use stepwise method. So that means just we are not using this stepwise. Just click on, see this one.
First table, analysis case processing summary. In this we have valid n, that is 100 observation. Let's read the second line, excluded what? Missing or out of range group codes. How many observations? That is 50. 50 observations हमने छोड़ दी. Why? Because those 50 observations belongs to third category of the species. That's why it is giving 50 here. Got it? Now it is a very simple group statistics. It is giving you the, as per the categories, the mean and standard deviation of that. So it is, we can leave it this one. Okay. Let's come to this matrix, this table. Test of equality of group means. Test of equality of group means. इसका क्या मतलब है? वन वे अनोवा क्या था? वन वे अनोवा क्या था? उसका क्या मतलब हुआ? हर कैटेगरी में देखिए, बेसिकली तो हमारे पास एक कैटेगरी में, मतलब वाई में हमारी दो ही कैटेगरी है. तो यदि हम किसी भी वेरिएबल को टेस्ट करने जाएंगे तो कौन सा टेस्ट होना चाहिए? टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से हमें उनकी चेक करनी चाहिए ना. बट टू इंडिपेंडेंट, यदि हम अनोवा को लेकर के बात करते हैं तो वहां से भी हमें सेम रिजल्ट्स मिलते हैं. ये क्लियर है? ठीक है. या तो हम अनोवा से चेक करें या टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से चेक करें, क्योंकि ये डेटा सेट हमारा, ये जो टेक्निक बनाई गई है, दैट इज नॉट ओनली फॉर द टू ग्रुप्स, कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द multiple group, more than two groups. In more than two groups, if you want to compare the mean, then obviously the ANOVA comes into the picture. That means for every variable, every independent variable, sample length, sample width, so sample length को basically he is considering the dependent for the ANOVA. For case of ANOVA, sample length को he is considering the dependent variable, and जो आपका y है, उस जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है उसको कंसीडर कर रहा है वो इंडिपेंडेंट. कितनी कैटेगरीज है? तो दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस एफ स्टैटिस्टिक्स इज 1, p माइनस 1, याद हो तो. और दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती थी? n माइनस p. व्हाट इज n? 100 माइनस 2, दैट इज 98. 100 माइनस p माइनस 1 और एरर की n माइनस p, जिससे टोटल की आपकी n माइनस 1 होती थी. अनोवा के केस की बात कर रहा हूं. तो सेम थिंग इज देयर. दैट मीन्स इंडिपेंडेंटली चारों वेरिएबल के लिए एक तरीके से वो आपका अनोवा परफॉर्म कर रहा है विद दिस, बाय दिस टेबल. जस्ट दी ऑल द वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट SIG बिकॉज ऑल वैल्यूज आर लेस देन 0.05 और 0.1, जो भी 5% क्राइटेरिया ले या 1% का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट all the variables are significantly contributing in developing the discriminant function. यदि ये f की वैल्यू से जो सिग्निफिकेंस चेक हुई है, इसका मतलब है कि सारे के सारे वेरिएबल्स, आपके चारों वेरिएबल्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन डेवलपिंग द डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन. दैट इज द वन ऑब्जेक्टिव, कि सारे वेरिएबल्स हमारे फुल कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ठीक. दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? कौन सा वेरिएबल ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, डोमिनेटिंगली कंट्रीब्यूशन डोमिनेट कर रहा है इन डिस्क्रिमिनेशन. कौन सा कर रहा है? पेटल लेंथ. व्हाई इट इज सो? थर्ड वन, petal length. Why it is so? Because Wilks lambda is minimum for petal length. Is it clear? Wilks lambda is minimum for petal length. That means petal length is highly contributing. Discriminate significantly contribution सबका है, but high किसका है? It is the petal length. Is it clear? Now pooled within covariance. So this is the matrix for the covariances and variances matrix, correlation and covariances matrix. तो इसको हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इसको देखना है. जस्ट वी वांट टू चेक दैट कि जो आपकी ये मैट्रिक्स ऊपर है,
that is homogeneous or not. That is homogeneous or not, which can be tested by box and as for the equality of covariances matrix. आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं? इक्वलिटी ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो चारों जो वो ग्रुप आपके बने, दोनों ग्रुप के आपके वेरिएंस कोवेरियंस कैलकुलेट हुए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने पूल्ड वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट की। बेसिकली यू आर कंपेयरिंग टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ऑफ द ग्रुप 1 विद द मैट्रिसेस ऑफ ग्रुप 2। जैसे दो सैंपल वेरिएंस आप टेस्ट करते हो before performing the two sample independently test, sample of the variance of the sample 1 with sample 2। सिमिलरली यहाँ पर दो ग्रुप के कोवेरियंस वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स को किया जा रहा है, whether it is same or not, homogeneous or। just see over here what is there, we will have how many variables, total variables कितने हैं, total variables कितने हैं independent, 4। This rank gives the number of independent variables. This 4 is because of independent number of independent random variable, number of independent variables. That is 4. That's why it is. What do we mean by the log determinant? It is the log determinant of variance covariance matrix for each group. Log of determinant of variance covariance matrix of each group. Is there so much difference between these two log determinant? Not so much. पूल्ड का आपका 11 आ रहा है, एक का 10 आ रहा है, 10.8 है, उसका 13 है। तो दैट मीन्स देयर इज अ नॉट सो मच डिफरेंस बिटवीन log of determinant of the variance covariance matrix, but this should be confirmed. The homogeneity of the variance covariance matrix is confirmed with the help of Box-M test. Box-M test क्या कह रहा है? Box-M test क्या बता रहा है? Highly, that means variance covariance matrix are not equal or not homogeneous, सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी assumption तो चली गई, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स की होमोजेनिटी की या सेम की जो assumptions थी वो तो चली गई, मींस वो मीट आउट नहीं हुई। बट पॉइंट हियर इज दैट यहां से हम अपना एनालिसिस का ट्रैक चेंज नहीं कर रहे। व्हाई सो? बिकॉज फॉर लार्ज नंबर ऑफ n देयर इज अ चांस कि वहां पर वेरिएबिलिटी होगी। जैसे जैसे अब n कितना है 50 फॉर ईच ग्रुप, इफ दैट n इज क्लोज टू 20 देन देयर इज अ हाई चांस कि आपकी वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होमोजेनियस भी। बट जैसे जैसे आपका n लार्ज होगा वैसे ही वैसे आपकी ये एजम्पशन वायलेट होगी, मीट आउट नहीं होगी। देन व्हाट कैन बी डन? जब कैसे पता करें कि कितना तक हम ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ n वेरिएबिलिटी है, या पॉइंट इज दैट कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए था, बॉक्स m में हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, नहीं हुई तो क्या फायदा है, क्या करना है? करना ये है, हमें देखना है कि लॉग ऑफ डिटरमिनेंट, क्या लॉग ऑफ डिटरमिनेंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जैसे 10 और 20 या 10 और 50 का, इस तरीके का। यदि इस तरीके का तो देन ऑब्वियसली वी हैव टू लीव आउट इट, देन वी हैव टू गो फॉर व्हाट, क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, QDA। इफ यदि हमारा इफ द दिस मैट्रिक्स इज नॉट homogeneous, then we have to go for the QDA. Not only basis of this Box-M test, but also include the interpretation from the log determinant. The log determinant में ज्यादा difference नहीं है, then we can go, we can move. But if we have more difference in the log of determinant, then we have definitely go for the QDA. हम
एलडीए पर एलडीए हम ला रहे हैं, सुटेबल नहीं है उस डेटा सेट के लिए। There is a one question from the online participant who is asking, sir, what is the role of log determinant? Log determinant is basically this is log of the determinant of variance covariance matrix for the group Setosa as well as for the group versicolor. So this will also talks about whether the groups are groups have the homogeneous variance covariance matrix or not. If there is a less difference or there is a not so much difference between log of determinant, then we will say that the groups are homogeneous in terms of variance covariance matrix. If there is a high difference, then obviously we have to give up, because in this case box m is rejecting your null hypothesis. That's why log of determinant comes into the picture. Otherwise, यदि बॉक्स एम से हम लोग अपनी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर देते, देन वी हैव नो नीड टू चेक द लॉग ऑफ डिटरमिनेंट। गॉट इट? तो ये इंटरडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशंस का होगा। देन जस्ट सी दिस वन, हाउ मच कैनोनिकल कोरिलेशन इज देयर? 0.92। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन इज दिस वन? कैनोनिकल कोरिलेशन किसका? बिटवीन ग्रुप्स एंड डिस्क्रिमिनेंट स्कोर, between groups and discriminant score. It is very high because range कितनी होती है canonical correlation की? 0 to 1, and it is close to 1, which means that highly correlated है groups. Although you can see eigenvalue, which is again a very high as compared to 1. यदि आप 1 से भी compare कर, that means this discrimination is classifying or is having a high, is explaining the high variability. Got it? Now this Wilks lambda. Again, you can see the value of the Wilks lambda is 0.03, very low. So that means it is, this value is for the whole discriminant function. Again, it is very low. As well as this chi-square test statistic is testing canonical, whether the canonical correlation is equal to 0. Canonical correlation 0 होने का मतलब क्या होगा? Canonical correlation 0 होने का मतलब क्या है? That means डिस्क्रिमिनेंट स्कोर और ग्रुप्स के बीच में कोरिलेशन नहीं बन पा रहा है, ये उस बात की टेस्टिंग करता है। somehow this canonical correlation comes 0.6, 0.4, 0.5, then in this case it is very high. Obviously the data is a kind of that, so that means it is 0.9, 0.8, 0.98, then obviously it is a high canonical correlation. That means ग्रुप्स बहुत, जो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है। यदि 0.4, 0.5 आता है तो इन दैट केस वी मे बी इन काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि वो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन हमारा सही बना है कि नहीं बना है। दैट कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस chi square significance value। क्या टेस्ट कर रहा है? वेदर द कैनोनिकल कोरिलेशन इज 0। इस कोरिलेशन की एक तरीके से ये टेस्टिंग है विद द हेल्प ऑफ दिस chi square एज वेल एज द लैम्डा, विल्क्स लैम्डा। दोनों में लैम्डा भी 0 है और यहां से हमारा chi square भी significant आ रहा है। These are the standardized canonical discriminant function coefficient। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि जितने भी आपने जो जेड, जो आपके एक्स थे उनको सबको जेड में कन्वर्ट कर दीजिए। जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बिहाफ पर जो कोफिशिएंट्स आए दैट इज दी दोज वैल्यूज। और ये क्या है? स्ट्रक्चर मैट्रिक्स। दिस इज फॉर व्हाट इज स्ट्रक्चर मैट्रिक्स? व्हाट इज स्ट्रक्चर मैट्रिक्स? अभी बताया था, discriminant loading like factor loading or communalities। In that case you can see that which particular variable has the highest loading, which variable has the highest loading? Petal length।
विलिक्स लैम्डा किसका सबसे ज्यादा था, सॉरी सबसे कम था? विलिक्स लैम्डा किसका सबसे कम था? पेटल लेंथ का। दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर विलिक्स लैम्डा, जहां पर आपके इक्वलिटी ऑफ होमोजेनिटी वेरिएंसेस की, इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस की हमने बात की थी, ये। सेकंड नंबर पर विलिक्स लैम्डा किसका है लोअर साइड से? पेटल विड्थ, दैट मींस सेकंड हाईएस्ट लोडिंग किसकी है? पेटल विड्थ। ये दो वेरिएबल हैं जो हाईली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या जिनकी लोडिंग ज्यादा है। Now we can discard those variables which has lower less than 0.3 loadings. इस केस में दोनों की फैक्टर की, दोनों वेरिएबल्स की लोडिंग 0.3 से कम है। We have also checked some other assumptions और other things कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट स्कोर सही बन रहा है, कैनोनिकल कोरिलेशन सही आ रहा, so that we can keep on all these two variables into the discriminant function। यदि नहीं आता उतना अच्छा कैनोनिकल कोरिलेशन, ऊपर विक्स लैम्डा की वैल्यू उतनी अच्छी नहीं आती, देन ऑब्वियसली वी हैव टू ड्रॉप दीज टू वेरिएबल्स। नाउ दीज आर द कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन कोएफिशिएंट अनस्टैंडर्डाइज्ड, सिमिलर टू मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जो अभी आपने इक्वेशन लिखी हुई थी, जस्ट व्हाट वी कैन डू, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम बट is there any way to transpose these variables? First, it is the first one is the value of this b1. Sorry, is b1 key. The function is what is b0? It is minus 1.374. What is b1? b1 किसी को सेपल लेंथ को हम b1 कह दे रहे हैं, मतलब इसको सेल कर देंगे। माइनस 0.3, it is your SL सेपल लेंथ, ओके। Then we will have minus 1.774 SW plus 2.142 is PL petal length plus 3.036 is PW petal width. This is your discriminant function. It is equal to this. This is your discriminant function. जैसे आप फिटिड रिग्रेशन मॉडल लिखते थे, कांस्टेंट SL SW PL PW, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस वन? जस्ट कैलकुलेटिंग द functions at group centroid. What do you mean by this? Functions at group centroid. इसका मतलब हुआ कि हमारे दो ग्रुप हैं। Just now do one thing, go to analyze and then go to classify. Now do one thing, classify, then discriminate, then save discriminant score. Just only do this thing. Continue. वो सब चीजें कर लीजिए जो आपने कैलकुलेट किए। Now just save the score. If you save the score, now you can see that
दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट स्कोर। आगे सेव होकर के जैसे फैक्टर स्कोर आए थे। नाउ फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस डेटा सेट, इस डेटा सेट वन के लिए मीन एंड मीन फॉर सेकंड, दैट इज द सेंट्रोइड फॉर वन एंड सेंट्रोइड फॉर ग्रुप वन। ग्रुप वन के लिए मीन कैलकुलेट कर लियो, दिस डिस्क्रिमिनेंट स्कोर एंड मीन ऑफ द second group, which is giving and put this is the function value. Function है group centroid. Unstandardized canonical discriminant function evaluated at group means. Got it? Now just take the mean of these two. दोनों, क्योंकि दोनों हमारे कैसे हैं, इक्वल साइज थे वेरिएबल, कैसे हमारे इक्वल साइज के, then just take the mean of these two, that is 0. Now any value ये मीन कैसा आ गया हमारा, ग्रुप मीन जो आ रहा है सेंट्रोइड वाला जो आ रहा है, आई कैन से इट इज इक्वल टू 0। ग्रुप मीन 0 आ रहा है क्योंकि one thing is minus 5.080, the second one is 5.080. Got it? So what is that? It means that the sum mean of these two is 0. Now put any value in this function. Just put any sepal length, just put any sepal width, just put any petal length, just put any value of the petal width. Then you will calculate the value of the if that D scores it comes out to be 0.5, which is what greater than 0, then that means इस ग्रुप में जाएगा वो सेकंड ग्रुप का पार्ट। तो सेंटर इज 0, 0 से कम होगा तो सितोसा में जाएगा, 0 से बड़ा होगा तो वर्सिकुलम में जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ this discriminant function. So just you have to enter only these values SW, PW, SL, EL. Using this discriminant function, you will get a one number. If that number is less than 0, it is setosa. If that number is greater than 0, then it will go to the Versi. On the basis of that, they have classified. तो सारी वैल्यू जब आपके ऊपर की बनी हुई है, वो नया नंबर उन्होंने उस तरीके से डिफाइन किया, which comes out to in this way. It is clear? Role of the centroid. Otherwise, you can use weighted. Y1 bar this one, Y2 bar is this one. So N1 Y1 bar, N2 Y2 bar upon N1 plus N. Then you can decide. Got it? Then again you can see the prior probabilities which we have used 0.5, 0.5 because two groups equal. Just copy this graph. Just see my output only. You have no need to do anything right now. I am pasting to histogram onto the board. Okay? To histogram one, the second one. ठीक, दोनों हिस्टोग्राम आपके बने हुए, दोनों हिस्टोग्राम को मैंने एक साथ एक ही साइज के हिसाब से, जितना साइज ऊपर की इमेज का था वही साइज नीचे की इमेज का रखना है। इफ आई ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम हेयर लाइक दिस, कैसे भी डाल दूं यहां से मैं इसका, क्योंकि तो बहुत क्लियर कट क्लासिफिकेशन हो रहा है। एक लाइन आप इस तरीके क्लासिफाई कर रहा है, दैट लाइन इज सेपरेटिंग बोथ द ग्रुप्स।
इसका क्या मतलब हुआ, दोनों ग्रुप बिल्कुल अलग अलग है। जैसे भी मैंने वो कर्व बना करके दिखाए थे, हिस्टोग्राम के बदले में कर्व बन सकता है, बट बाय डिफॉल्ट एसपीएस इज गिविंग यू द कर्व, हिस्टोग्राम। SPSS is giving you the histogram. That's why you can see somehow maybe there may be a chance कि ये थोड़ा बहुत overlap करें histogram. Maybe a chance of misclassification. Otherwise you can see the classification accuracy कितनी होगी इस मॉडल की, 100%, close to 100%. Let's say this one. 100% of original group cases are correctly classified. कैसे, डायगोनल ये ले लीजिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। एक्यूरेसी कैसे होगी, डायगोनल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, दैट इज 100। 10 मिनट और, इसमें कोई डाउट किसी में भी? नाउ जस्ट अगेन गो टू क्लासीफाई एंड देन डिस्क्रिमिनेट। नाउ वी विल यूज all three groups, 1 to 3, got it? 1 to 3, continue. Just continue. Statistics same, just do one thing over here, फिशर भी कर लीजिए, फिशर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन इन स्टैटिस्टिक, मीन descriptive all three in function coefficient, you can calculate both type of function coefficient. In matrices again, as per the requirement, if you want the correlation then you click on correlation, if it is want the covariance then you can click on the covariance. Continue. Then in classify, display summary table and leave one out classification is also there. Just in place of this separate group, just click on combine. Rather we getting the separate graph, we can go for the combined groups. Just click on it. Okay. Any query from the online participants? Okay. Just click on OK. Just see now. Now we are getting valid 150. What we are excluding here now? 0. Why sir? सारे केसेस हमने कंसीडर कर दिए। It is again a simple descriptive statistics, so I think there is no need to discuss it. Now just see sepal length, how many categories is there in Y? 3. P minus 1 means 2. That's why we are getting df1 is 2 and df1 is 150 minus 3, that is 147. Again all the three variables are significantly, again all the four variables are significantly contributing in developing a discriminant function, but most dominating is again length and then petal width. Is it clear? Petal length, then petal width. Now again the same pooled variance, covariance and correlation matrix. Again the same thing is there from the box M test. Again we are rejecting the null hypothesis. What kind of null hypothesis here we are rejecting? The equality of variance covariance matrix. That means homogeneity of variance covariance matrix is not present. But just see log determinant. But one more thing is there, 8 and 13. Now it is a little bit dicey case. You can also go for sometimes in some situation to apply the quadratic regression model also. But in this case again 8 to 10, 10 to 13. So that means we can assume that there is again not so much difference between the log determinant of variance covariance matrix, so that we can continue with the linear discriminant function and linear discriminant analysis. Otherwise
quadratic we have to go for. And just see this one, the first eigenvalue. That now, as I told you that if you have the three categories in your y, then for that you will have two discriminant function. The first discriminant function is the one that has 0.98 canonical correlation, and second one has 0.47. As I told you, it's in some cases that correlation may be 0.3, 0.4, 0.5, anything between 0 to 1. But this Wilks lambda again in a first discriminant function is 0.02, but in second case it is 0.7. That is little bit high. But just see the chi-square significance. It is saying that both discriminant function are significantly contributing and significantly discriminating the observations. Clear? These are the unstandardized score as for the previous one. This is the structure matrix. So on the basis of as you create the basically what as you have developed the factor analysis, which particular variables goes in the which particular factor, which particular variable goes into the which particular factor depends on the factor loading. कौन से वेरिएबल को हम किस फैक्टर में लेते थे, which has the highest loading except the साइन, साइन को कंसीडर ना करते हुए जिस वेरिएबल की हाईएस्ट लोडिंग है that will highly contribute in that function. So in the first function you can see that petal length and petal width are highly contributing, but in the second function you can see that sepal width and then petal width are dominating in that sense actually. Yeah, they are having the more weightage. Why so? Because in a function one, the highest structure matrix score for the petal length and petal width, but in the for the second function, it is for sepal width as well as petal width. Is it clear? Again, the coefficient. So as we have written this discriminant function, I can say this is my b1. On the in this particular case, the coefficient will be different. Okay. Similarly, based on the coefficient, you will also have b2. On what ground? On the basis of that, these two function coefficient, these functions, these values. Is it clear to all of you? On the basis of these two coefficients values, we can write down two discriminant function like t1 and t2. Obviously, in this particular case, the coefficient will be different. d1 के कोफिशिएंट होंगे जो फंक्शन 1 के कोफिशिएंट है एंड d2 के कोफिशिएंट होंगे जो फंक्शन 2 के कोफिशिएंट है. Just for the saving the time, just I am not changing the coefficients. Okay. So again, we will have the centroid for the function 1 as well as for the function 2 using the same criteria. Again, we will have centroid for the function 1 and function 2. And in this case also, we will have the 1 by 3 prior probabilities. Otherwise, you can also give the different kind of prior probabilities. And this is the classification of coefficient. फंक्शन के कोफिशिएंट्स हो गए. दैट मींस सिटोसा के लिए ये बनेंगे, वर्सिकुलर की कैटेगरीज के लिए ये होंगे एंड वर्जिनिया के लिए. जस्ट सी दिस वन. This graph is more important. It is clearly discriminating the three groups. What is this point? It is the mean of this group. Mean of this group. Mean of this group. So my question is to you that in the previous one
That means when we have the two category, we have decided which particular variable or which particular observation goes to this particular group based on the combined mean or average of two centroid. But how will you decide in this case which particular observation will go to this particular group? How will you decide? दो फंक्शन है, ठीक है, तीन ग्रुप बनाने हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करना होगा, तो कैसे होगा? उसमें तो हमने सीधा सीधा दो सेंट्रोइड सेंट्रोइड इसमें भी निकल रहे हैं। हाँ भाई, दोनों सेंट्रोइड का भी सेंटर निकालेंगे तो वहां से भी बात नहीं बनेगी कुछ। देन हाउ विल यू डिस्क्रिमिनेट द ऑब्जर्वेशन? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट कैन ऑल्सो रेस्पॉन्स। हाउ? ये तीन ग्रुप बनाए कैसे उसने? दैट इज माय क्वेश्चन। ही विल कैलकुलेट discriminant score for every variable based on this one, based on this function। जो फंक्शन आपने दो बनाए हैं, जो फंक्शन स्कोर्स आपने बनाए हैं, जिस फंक्शन के लिए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर ज्यादा आ जाएगा जिस भी कैटेगरी के लिए, दैट particular observation will goes into that group। So on the basis of this discriminant score, this discriminant score, ये फंक्शन से, तो एक फंक्शन से आपने वैल्यू निकाली, दूसरे फंक्शन से वैल्यू निकाली, वो फंक्शन आपके पास है, ठीक है। दोनों फंक्शन की वैल्यू को मीन से कंपेयर आपने कर लिया इस सेंट्रोइड से, जिसमें भी आपको दोनों के केस में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी डिस्क्रिमिनेंट स्कोर की, जिसमें भी डिस्क्रिमिनेंट स्कोर की वैल्यू मैक्सिमम होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन विल गो टू दैट कैटेगरी। उस कैटेगरी में वो ऑब्जर्वेशन आपकी जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ जस्ट इन द लास्ट टेबल यू कैन सी द क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी 50 plus 48 plus 49, that means approximately, that is 98% it is correctly classified। So at a particular point of time we are having some kind of troubling situation या confusing situation, one may be the log of determinant having the some kind of difference, या homogeneity of covariances की बात हम कर रहे थे तो उसका पता नहीं चल रहा था कि वो आ भी रही है नहीं आ रही है। But if we see at the end of this analysis or all the results, we can say that this discriminant function is classifying very nicely because 98% is the accuracy। जबकि हमें तीन जगहों पर डाउट हुआ, कहां पर? सबसे पहला डाउट हुआ हमें इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस, लॉग ऑफ डिटरमिनेंट से भी कंफ्यूजन था, बट उसके बावजूद हमने क्या किया, दूसरा केस कहां अटका? केस व्हेन for the second function we are getting Wilks lambda as 0.7, तो वो भी लग रहा था कि 0.7 Wilks lambda की वैल्यू बड़ी है, but again that function has significant contribution in discriminating the function। But overall if we see and function this discriminant function is saying that we have a 98% accuracy, then we can say that these two discrimination functions are performing। Is it clear to all of you? If you have any doubt, then you can ask। One more thing that I can so just I will see the step only, I will not going to explain anything। Just go to classify and then discriminant and just defining range is 1 to 3, then just click on stepwise method। As you click on use stepwise method, the method option will highlight it and just click on it, we will have all the methods। By default Wilks lambda, that means we are using the Wilks lambda। If you want to use unexplained, then just click on unexplained variance and just the results will remain almost same।
go for the Mahalanobis distance, you can use the Mahalanobis distance rather than Wilks lambda. Wilks lambda is used for unexplained variance. Ratio, unexplained variance. The proportion of unexplained variance. This is directly for the unexplained variance. It is for distance based. Got it? When it is F ratio based. These are the results for this. So that means I am not going to perform this one, but if you want to do, then you can easily perform, and results will also be kind of similar results, and you can interpret all those results. So this is all from my side.